गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 एंड आई जस्ट वोक अप। नाउ आई एम गोइंग टू हैव माय ग्रीन टी एंड आई विल बी डूइंग माय वर्कआउट। एंड बालों में थोड़ा सा ऑयलिंग करूँगी, मेरे बाल बहुत डैमेज हो गए। सो आई एम थिंकिंग कि आज थोड़ा सा हेयर केयर कर लूँ, बिकॉज मैं अपने बाल पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती हूँ। आफ्टर कलरिंग इट इज़ गेटिंग डैमेज। सो आज मैं वही करने वाली हूँ एंड लेट्स सी मेरा दिन कैसा जाता है आज का। सो हियर आई एम डन विद माई वर्कआउट एंड मेरे बालों में ऑयल भी लग चुका है। यू कैन सी मेरे बाल फ्रंट से बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं, एक वेव कर्ल बन चुका है उनमें। सो आई हैव हर्ड अबाउट एग मास्क फॉर हेयर एंड आई नो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बालों के लिए, बट आई एम वेजिटेरियन। बट स्टिल आई विल गिव इट अ ट्राई टुडे। अगर ये मेरे बालों के लिए अच्छा होता है और स्मेल का इशू नहीं होता है, देन आई विल कंटिन्यू विद इट। So here I'm taking whole egg and उसमें I'm adding lemon juice just to avoid smell, and we need to mix it and just need to apply it on here. Here I'm making something for my face. I have applied egg on my face as well because I was not getting any smell. This face pack was amazing. Like, you will feel the difference in first application only. सो आई एम डन विद माई शावर एंड आफ्टर शावर रूटीन। अभी मेरे बाल गीले हैं, सो आई कान गिव एनी रिव्यू कि कुछ डिफरेंस है कि नहीं। आफ्टर गेटिंग ड्राई आपको पता चलेगा कि आपके बाल में थोड़ा सा भी डिफरेंस है नहीं। अगर मुझे इतना सा भी डिफरेंस लगा, बिकॉज आई एम द पर्सन जो कभी अपने बालों का ध्यान नहीं रखता है। एंड लास्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू द वाटरफॉल, मैंने अपने बाल अननेसेसरी वहाँ पे गंदे पानी में गीले कर लिए थे एंड आफ्टर दैट इट स्टार्टेड ईचिंग। एंड आफ्टर दैट आई रियलाइज्ड कि बाल बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो रहे हैं आफ्टर कलरिंग। एंड because of that itching, I have decided to take care of my hair. So I'll do home remedies, I'll do anything which can give protein to my hair, and I'll do all the necessary things to improve my hair quality, because I believe कि मैंने कभी अपने बालों का ध्यान नहीं रखा एंड इट इज़ द रीज़न कि मेरे बाल अभी इतने ख़राब हो चुके हैं। सो लेट्स सी कि ये वाला हेयर मास्क कितना यूज़फुल है। एंड टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल भी स्मेल नहीं आई। आई डोंट नो वाई, लाइक अंडा बहुत अच्छा था, पता नहीं क्या। आई एडेड लेमन जूस एज वेल। एंड उसके बाद में जब मैंने आई अप्लाइड ऑन माई फेस, मैंने चंदन पाउडर मिक्स कर लिया था, सो सैंडलवुड पाउडर। सो उससे बिल्कुल मेरे को 1% भी स्मेल नहीं आया एग का। सो थैंकफुली, लाइक ये वाला प्रॉब्लम तो नहीं है कि मैं फ्यूचर में यूज़ नहीं कर पाऊंगी बिकॉज ऑफ दिस स्मेल। सो आई वॉज रीडिंग बुक एंड बुक पढ़ते पढ़ते मैं सो गई थी, बिकॉज आई वॉज फीलिंग टायर्ड एज वेल। मैं 4-5 बजे से उठी मॉर्निंग में एंड आई वॉज डूइंग ऑल ऑफ माई वर्क। नाउ लेट्स डू द रेस्ट ऑफ द वर्क। मैं सोच रही हूँ कि मेरे ये दोनों शूज़ बहुत गंदे हो गए हैं, सो लेट्स वॉश दे। अभी हम दोनों शूज़ को धोएंगे। We are going for the evening walk. Then we had pani puri and I got some snacks and munchies. सो आज मुझे स्मिटन का ये पार्सल रिसीव हुआ है एंड मैंने इसका रिव्यू वीडियो भी बनाया है जस्ट। Even after taking nap for 3 to 4 hours in day, I'm still, feeling that this day was very productive. And अभी तो बहुत टाइम बाकी है रात होने में भी। चीज़ बहुत ज़्यादा गंदे हो गए एंड ये
फर्नीचर के काम में इसमें बहुत ज़्यादा डर लग गया है. So I'm going to wash them off. So I'm going to segregate all the dirty and clean products. Only I was thinking to buy a new lot for scrunchie because I was feeling कि सब पुराने हो गए हैं, बहुत ख़त्म से हो गए हैं. So these are the most usable and that's why they are dirty. So going to clean them. ये तो हॉट वाटर और डिटर्जेंट में डालते ही पूरा क्लीन हो गया. नाउ आई एम गोइंग टू लीव दिस. स्नैक्स वाला सेक्शन पूरा खाली है, पूरा इसको फिल करना है. सो रिसेंटली वी रिसीव दिस पार्सल फ्रॉम फ्लिपकार्ट. दिस पीनट बटर. ये मेरा भाई ऑर्डर करता है एंड इट इज़ माई फेवरेट. इट इज़ इन चॉकलेट फ्लेवर. सो थोड़ा सा मैंने भी अपने रूम में निकाल के रख लिया इसके लिए. Because many times we crave for chocolates or something sweet and this is a good option. I have arranged my snacks here. So that's it for the day. Today my day was very productive and with that I'm going to sleep. I'm very tired. I sleep early but today I got late, so good night. Stay hydrated.